Okay, welcome guys. Welcome to Topcoder Community Monday Meetup, South Asia region. So today I'll address mostly our viewers on YouTube and people who are watching this not live right now. I mean through the video. So I'll address to you and I'll do the presentation in English. Okay. And generally speaking, I generally speak in English during meetups, but if required, if the people who are attending the meetup want me to speak in Hindi, which is my mother tongue, so I can do that as well. So in case you want to join the meetup in the future live and you want to ask questions in Hindi, or if you want something to be explained in Hindi, you can do that. You can join the call. And in addition, I also can understand some other languages. Almost most of the North Indian languages I can understand. So if you have any questions in those languages as well, you can come and talk to me about that in that language. Okay. Okay. So today is June 6th. It's a Monday. So happy Monday. And I hope at Topcoder you don't get to feel the what do you call that? The blues that you generally feel in a what do you call that? Like a 9 to 5 job. So I hope if you are a full-time Topcoder, I hope you are having a good time like every day. So yeah. First of all, I'll talk about the Topcoder Nation show. This is basically a show that is hosted by Maestro. Maestro's real name is Luis, and he is from I think he's from Venezuela in South America. And he every month he does a meetup, not a meetup. He does an interview with one of the members from Topcoder. Like it can be any member of any kind. It can be a basic member. It can be someone in a full-time job at Topcoder. It can be a reviewer. It can be like special contracting members like myself. And similar to me, Abby's from Africa. He helps with community engagement and growth and member growth. So it will be a very exciting interview that I personally am looking forward to watching. Okay. And okay, and this is the link. Yeah, given that we don't have any folks right now on the call, I won't share the link. So this is a link in case you are watching this video in full resolution. I hope this link should be visible. And if the link is not visible, you need to actually come to Discord. Okay. And in case you're not aware, we have a Topcoder Discord where there are a lot of fun activities going on right now. It is a lot more fun compared to the Slack channel, Slack community that we used to have. So yeah, in case you haven't registered yet, please come to Discord and we can share the link over there. Okay, and you'll also get notifications when the event is actually live. Okay. 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 So the next is the Hangout Friday number 7. So Hangout Friday is basically it's a fun event. Okay, and this is hosted by Topcoder as basically a fun event that anyone can join and we can have a good time. So it is always good to know each other, like good to know some of the co-pilots and some of the reviewers who work on your challenges. So to facilitate that, we host this every month, and this is usually hosted on the last Friday of every month. Okay, so this is the event, Hangout Friday number 7. So this is going to be the 7th one, and this is going to happen on June 24th. So today is 6th. So this will be like 2-3 weeks later. Okay, and again, I won't share the link because it won't be shared with the YouTube people who are watching this. So yeah. Okay. Okay. So yeah. So the next one is the Crowd for Good challenge. So as you might be aware, in case you are in machine learning and if you have been regular on Topcoder, that right now we have a challenge going on under the Crowd for Good platform. Okay. Platform, not platform. It is a initiative or a project, you can say. It is called Crowd for Good. So the concept is that we are using crowdsourcing for the good of someone. And this time, like one of the people who, like his name is Dan. He works at Topcoder. So it was his initiative that let us work on like cancer this time. Okay. So the goal is that we will be hosting data science competitions in the field of cancer.
and we will be working mostly on cancer-related data sets. So in this particular challenge, we are not working on like a real world, like a very significant data set. This is only for benchmarking. Okay, like this is for benchmarking as well as this is for what do you call that? Community engagement, that we want the community to be engaged somewhat. So this is for that. Okay, and yeah. So yeah, if you are in machine learning, this is a very good opportunity to get acquainted with the platform as well. And this is a very straightforward challenge in case you are familiar with machine learning. Okay, yeah. And if you want to know more about this, I mean the initiative, you can come and ask questions in the forum as well. We would be happy to share information with you over there. Okay. 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 So yeah. So Figma, I think I'm not entirely familiar with Figma, but Figma is basically a like a design tool. Okay. So it's a design tool that is used by UX developers worldwide. So this will be taught to you like free of charge by. Okay, so it's a very good initiative. This is basically a free course. Okay, so this is 75 minutes of content and 11 videos. So this will be taught to you for free by two of the top coders, top coder members like Yoki and Luis Maestro. So these are like veterans at Topcoder, and they have like won many challenges, and now they co-pilot, and they are like very senior members. Okay, like 15 plus years of experience. So they will teach you how to do these things. So a wonderful opportunity if you are looking forward to learning this. So this is the link. I think you should be able to read this. This is topcoder.com/community/learn/Figma. Okay. Yeah. And again, for data science as in machine learning, we have a data science skill builder challenge going on. So over here, if you are a Python developer or if you're familiar with data science with Python, I mean, there are a lot of data scientists who are familiar with R, but this is particularly for Python data scientists. So in this competition, this is, I think it consists of three problems. Yeah, this one, like easy, just this one. So basically there will be three problems. One is easy, one is medium, and one is hard. So over here, you can see that there are prices, like 10 prices from $750 to $25. So for people who are like familiar with machine learning and Python, this is a wonderful opportunity to get yourself acquainted with everybody. I mean, the community as a whole, as well as how the co-pilots work and all that. Okay. So, and skill builders in general are a very good opportunity to learn about the nuances of Topcoders. Okay. Okay. Now moving on to the next one. Okay. Yeah. So I think it's tomorrow. We are going to have. Oh no. So it's on the. I think it's in June 11th is maybe Tuesday. So we are going to have a Twitter Spaces. So what is Twitter Spaces? So as you must have seen, if you are a Twitter user, there are sometimes there are communities that actually discuss things using voice chat. Okay. There is no video, there is no like written communication, and it is totally like vocal discussion. So right now we are looking to explore that. We are looking to explore the Twitter. We are looking to use the Twitter account to create those spaces and have those discussions. So like I'm personally looking forward to joining this, and I think Pena will definitely be there, and I will also try to be on the call. Okay. So if you don't have a Twitter account, create one account and start following Topcoder, and then we can, when we decide to when we start hosting the spaces, you can join, and you can also share your thoughts over there. Okay. So yeah, so very good initiative from Topcoder to engage people on Twitter. Okay. Okay. So top gigs. So yeah, in case you're not familiar with gigs, at Topcoder, apart from the competitions, there are also gigs. So gigs mean temporary job. Okay. So gig is basically like a short-term job. It is called a gig.
that you don't have to join a company full time. You can join for a few months or few weeks or few days based on the gig. Like in some gigs, the timing is like it's pretty long. It can be like for 6 months, 1 year, or in some cases it is like very limited. Like for example, this one. So let us check out this. So this is for 4 weeks. So this is an excellent opportunity if you are looking for a short-term engagement. Like for example, some people don't want a very long-term engagement. For example, me, I don't like, apart from Topcoder work, I don't like engaging long-term with any other entity. So for me, like this kind of a thing would be good. So yeah, so in case you are familiar with these technologies, please go in detail because there are a lot of things over here. Okay. So if you think you have this, the skills in this area, you can apply, and please demonstrate everything. Please write everything in your CV, like how you fulfill these requirements, because the people who actually review your submissions, they want to see like how, like they want to see the skills mentioned in your CV, because sometimes they also use software for that. They sometimes use a software to see if you're like what kind of a CV you have. So it is always good to share all the details in your CV. Okay. Okay. And other than that, there are also, I see a data science, I see a design consultant. Okay, so this is a good one, design, because usually we don't see design gigs. So if you are a designer, then I think this looks like a very interesting opportunity. So the working hours is 9 to 5, I think 9 to 5 Indian Standard Time, and the compensation is 1200 to 1650 USD, which is a lot of money in my opinion. I think it will be around 1 lakh to 1.5 lakh per week. Which is very high, but not high in terms of like some companies in India. For example, in some companies there in India, they are paying a lot of money, at times even more than what they are paying in the United States. Okay, for some roles, but still this is a very good compensation, particularly for our region. So if you are in this area, consider applying if you have these skills. Okay. And by the way, if you want to explore on your own, you can always do so. You can change your location, any Asian country or India only. Okay, like this. Or you can search by typing your skills here. Okay, yeah. So this is very interesting. So this is about Topcoder Ambassadors. Okay, so what is Topcoder Ambassadors? So what is, look, I'll read it from here. So we have so many passionate members in our community who love Topcoder. If you are feeling the same and want to share Topcoder with those in your region, raise your hand. Okay. As we build up the new generation of community managers and ambassadors, I look forward to bringing on more passionate people from across the world. So I think this is a message from Jessie. So what Jessie is trying to do is that I think she wants to have some ambassadors in various regions, like but you have to be willing to help the community. You need to help the growth of the community. Okay. So if you are capable of doing that, if you think that I can maybe bring some people to join Topcoder, if you can do that, or if you can promote Topcoder in your region, you can host events. If you can do those kinds of things, I think you can come and register through this form and become an ambassador. If if you're, I've shared the link in the chat here, but in case you're watching this on YouTube, you have to come to Discord and we can share the link with you. Okay. And I would request everybody to join Discord. Okay, because if you're not joining Discord, then you will miss a lot of things that are shared there, and you will have like trouble searching for all the content. Okay, and over there it is very easy. You can just ask any question and somebody will share the link. Okay, this is very like interesting opportunity. So people who are like familiar with Topcoder can apply. This is a good opportunity. Okay, so I think this is the last thread. I mean, last slide. So over here we have some events that are coming up. These are like mostly like some of the key events in competitive programming kind of things. For the whole list of challenges, you need to go to topcoder.com/challenges, because this is not the entire list of challenges. Okay, you will get the whole challenge list over there.
but these are the key things that are covered. So first of all, we have the Crowd for Good challenge. It is going on right now. In 2 days, the submission phase will be over. So if you are thinking of submitting, please do so. Then we have the SRM 81. SRM is single round match. This is competitive programming. Okay. And competitive programming, you don't get any money, but you get TCO points, and you get to, if you qualify, you will get to go to Topcoder Open. And Topcoder Open is like a separate thing. Like you can search on YouTube, on Topcoder, and you can also search on YouTube as well. Okay. And if you go to Topcoder and search, you'll get a lot of articles within Topcoder, or you can search also on Google. And if not there, you can come on Discord, and we'll be happy to share everything about TCO Open over there. And if you want to explore this year's Topcoder Open, go to tco22.topcoder.com, and you'll get all the details over there. Okay. Then on June 10th, we have the RDM, Rapid Development Match. It is like a development match. It is similar to competitive programming, but not entirely, because over here, you actually need to do software development. Then we have the Topcoder Nation Show. Then we have the Rookie SRM. Rookie SRM is like for SRM for beginners. Okay, that kind of a thing. Or yeah, SRM for like non-experts. Okay. And then we have the Marathon Match 137. Marathon match. This is not a machine learning marathon match. This is like a traditional marathon match. This is only for TCO points. Okay. Then we have the Hangout Friday number 7 at this time. And UTC -10 is the time zone. Okay. For example, in India, the time zone is UTC plus 5:30. So this time is UTC -4. And then we have the SRM 832. Okay. Okay. So we are done with the presentation. If you guys have any questions, yeah, if I think I see Deepak here. So welcome, Deepak. If you have any questions, you can share. Or if not, you can let me know and we can end the call. No, I don't have any question for now. Okay. Actually, I'm so tired. And okay. You're working? Or you're working or what? Yeah, what? You're working? Yeah, no, actually, आज थोड़ा सा चला गया था बाहर, इतना धूप में आके सीधा सो गया मैं। okay. अभी जस्ट अलार्म बजा और मैं अलार्म बंद करके सो गया था, फिर याद आया कि मीटिंग ज्वाइन करना है। ओके, ठीक वैसे है। माइंड में था कुछ, अभी सडन याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो मे बी मैं डिस्कॉर्ड में पूछ लूँ आपसे। ठीक है, डिस्कॉर्ड में पूछ लो। हाँ, ये पूछना था, ये रिव्यू में कुछ लेट हो रहा है क्या, जो अभी आइडिएशन चैलेंज था क्राउड फॉर गुड का? हाँ, एक्चुअली क्या है कि उसमें मेरे तरफ से जो रिव्यू है मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने मतलब मुझे पता नहीं कि फाइनल डिसीजन एक्चुअली कौन लेने वाला, उसमें शायद जैसी लेंगी उसमें फाइनल डिसीजन। तो मैंने उनके साथ शेयर कर दिया था, बट वो शायद वीकेंड में अवेलेबल नहीं थी, तो आज शायद फाइनल डिसीजन बता देंगे, तो अकॉर्डिंगली मैं एंटर कर दूंगा। आज ट्राई करूंगा, बस उन पे डिपेंडेंट है कि कब वो लोग फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन था मेरा, एक जो मशीन लर्निंग बेंच मार्किंग वाला जो था, ठीक है, तो वो मतलब उसमें तो मैंने देखा बहुत सारे सबमिशंस ऑलरेडी जा चुके हैं। वो उसका जो रिव्यू होने वाला, किस बेसिस पे रिव्यू होने वाला है उसका पहले तो ये है कि कोड जो है उसको रिव्यू किया जाएगा। देखिए, एक टेस्टिंग डेटा सेट है मेरे पास में, ठीक है। टेस्टिंग डेटा सेट दे दिया गया, उसका रियल वैल्यूज नहीं दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो उसको यूज करके जो मशीन लर्निंग का टेक्निक होता है, AUC स्कोर को यूज करके मैंने लिखा है शायद रिव्यू क्राइटेरिया जो है ना, मैंने उसमें मेंशन किया, देखिए यहाँ पे, यहाँ रिव्यू क्राइटेरिया जो है, ठीक है। द रिव्यू विल बी परफॉर्म्ड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव स्कोरिंग, ठीक है। ओके। ये ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग यूजिंग AUC स्कोर। तो मेरे पास एक तो है टेस्टिंग वाला फाइल है मेरे पास, उसको यूज करके सिंपल एक स्क्रिप्ट चलाऊंगा मैं, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिंपल स्क्रिप्ट चलाऊंगा, देखूंगा कितना स्कोर आ रहा है, नोट कर लूंगा उसको, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला है कि कोड रिव्यू करूंगा, और फिर कोड के क्वालिटी के हिसाब से, डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटी से 20% वेटेज दूंगा उसको, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन और ओवरऑल जो कोड क्वालिटी होता है कि कैसा ऑर्गेनाइज्ड है, क्या है क्या नहीं है, वो टोटल जो क्वालिटी होता है कोड का। तो ये दो मिला करके मतलब मोस्टली आप लेके चलो कि AUC स्कोर के बेसिस पे ही है, और जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना अच्छा स्कोर आएगा, यही है उसमें। हाँ, क्योंकि मैंने देखा इसमें बहुत सारे ज्यादा डेटा सेट भी नहीं है, बहुत सारे मतलब, तो मेरे को लगता है ज्यादातर लोग इसमें वो होने वाले हैं, क्या बोलते हैं उसको, टाई हो जाएंगे क्या? टाई होने वाले हैं। देखिए, होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने उस बारे में सोचा था कि टाई ना हो जाए, क्योंकि देखिए इसमें क्या एक्यूरेसी स्कोर नहीं है,
ठीक है, जैसे नोट करने वाली बात है, ये एक्यूरेसी स्कोर नहीं है, ये AUC स्कोर है। AUC स्कोर में क्या होता है कि आपको प्रोबेबिलिटी को यूज करके निकाला जाता है। ठीक है, टाई हो सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि 100 नहीं आ जाए, सबको सबको 100 का 100 ना आ जाए। ठीक है, अगर आ जाता तो फिर देखते हैं, तब क्वालिटी के बेसिस पर तब डिसाइड होगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि उसमें आपका कितना अच्छा भी परफॉर्मेंस हो, लेकिन 100 आना होपफुली ना हो। ठीक है, क्योंकि उसको उस टाइप से डिजाइन किया गया है। तो मेरे को लगता है कि बहुत कांटे का टक्कर हो सकता है, कांटे का टक्कर गारंटीड होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना कि एकदम हल्का हल्का डिफरेंस है सब में। तो हाँ, तो जैसा जैसा उसमें होता है मैराथन मैच में जो कंपटीशन होता है, उसमें जो टॉप 4-5 लोग होते हैं, वो आप लेके चलो कि मोस्टली सेम ही होता है उनका परफॉर्मेंस, लेकिन बस थोड़ा बहुत आगे पीछे का फर्क होता है, एकदम हल्का सा। तो उसी से विनर डिसाइड हो जाता है। तो वही है, वही देखिए कि कैसा होता है इसमें भी। तो यही है, ये एक्चुअली वही उसी का बेंचमार्किंग के लिए है कि किस टाइप का परफॉर्मेंस मिलता है, कि अगर डेटा सेट दिया गया है तो किस टाइप का कंपटीशन होता है, कितना कितना का फर्क पड़ता है, एक आइडिया हो जाए उससे। और दूसरा है कि मैंने जो मेंशन भी किया था फोरम में कि एक्चुअली डेटा साइंस कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा आ नहीं रहा था, तो उसके मतलब उस प्लान के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है कि थोड़ा एंगेजमेंट भी मिले डेटा साइंस कम्युनिटी को। ठीक है, क्योंकि बाकी सब कॉम्पिटिशन आ रहा है थोड़ा बहुत, इसका नहीं आ रहा था, तो इसको लॉन्च किया गया एक साथ बहुत सारा चैलेंज। अच्छा, हम लोगों ने अभी 2 वीक पहले बात करा था कि जैसे कैगल के पास बहुत सारे मशीन लर्निंग के चैलेंजेस होते हैं, डेटा साइंस के चैलेंजेस होते हैं, उस तरीके का एक पहले पर्सनल बनाने का वो ट्रैक डेटा साइंस का, इसका कुछ अभी हुआ या नहीं अभी? फिर से समझाइए, क्या क्या बोल रहे हैं मतलब मतलब। डेटा साइंस का ट्रैक, मशीन लर्निंग एंड डेटा तो साइंस हाँ का एक बिल्कुल, आप ट्रैक वाली बात देखिए, चल रही थी। उसमें बात कर रहा था मैं ना, जैसे जो एक मैराथन मैच का एक चैनल है, हम्म तो उसमें मैं कर रहा था उसके बारे में, क्योंकि मेन तो उसी लोग से पूछना है, क्योंकि और इंटरनल बहुत हैवी काम हो रहा है इस पर एक्चुअली। मतलब मेरे तरफ से तो मैं पूरा लगा हुआ हूँ उसमें हाथ धो करके। अभी हम्म देखिए कि बाकी जो डिसीजन मेकर्स हैं उन लोग क्या करते हैं। अभी हो ही रहा है उस पर काम, मतलब देखिए, लेकिन मैंने उस पर प्रेजेंटेशन भी दिया था अभी कुछ दिन पहले इंटरनल टीम को। ठीक है, हम्म समझाया था सब कुछ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अभी शायद पहले तो क्या कोशिश कर रहा है किया जा रहा है अभी, कि डेटा हम्म साइंस का एक जो ट्रैक है अभी उसको साफ हम्म सुथरा कर दिया जाए, ताकि हम्म उसमें नॉन डेटा साइंस वाला मशीन लर्निंग का काम ना हो, मतलब ये मैराथन मैच का काम ना हो। जैसे बहुत सारे हम्म मैराथन मैच होता है ना जिसमें मशीन लर्निंग का कोई काम नहीं होता है या डेटा साइंस का काम नहीं होता है, हम्म, तो उसको हटा करके डाल दिया जाए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ओके। और इसमें बस मशीन डेटा साइंस का काम हो। तो इस टाइप का पहले साफ सुथरा करने का ट्राई करेंगे हम लोग पहले उसको, और वो हो जाएगा उसके बाद फिर उसके अंदर TCO ट्रैक्स बनाने का ट्राई करेंगे। तो सब पे काम चल रहा है अभी, देखिए कितना जल्दी क्या डिसीजन होता है, लेकिन उसमें काम जोरदार चल रहा है अभी। ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जैसे कैगल करता है ना, मैंने काफी लोगों को, मतलब खास करके इंडिया में अपने रीजन्स में, क्या कल में देखा मतलब होगा आपने। हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब कैगल के प्रति मतलब वो लोग ज्यादा वो है। बिल्कुल, देखिए हाँ। कैगल का क्या है खासियत ना, कि वो लोग का एक चीज अच्छा है कि वो लोग हैं कि ओनली फॉर डेटा साइंस वो लोग हैं। उसमें कुछ फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये सब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कुछ उसमें नहीं है, ऐसा कुछ। उनका है कि सीधा साधा बात है, बस डेटा साइंस है। तो डेटा उनका साइंस। पूरा 100% पूरा उनका जो टैलेंट है उसी पे लगा हुआ है। तो और उसका मार्केटिंग में एक्चुअली अच्छा है, उसके उसमें जो लोग उसको बनाए हैं वो लोग भी बहुत सीनियर लोग हैं, हाँ, तो इस टाइप का है। ये यही चीज मैं बोलने वाला था हम्म, कि मतलब अभी कैगल क्या है कि वो एक अलग लेवल पे उभर के आ रहा है, और हाँ, मुझे लगता है फ्यूचर में मे बी, तो हम लोग अगर डेटा साइंस को एक एज ए ट्रैक देते हैं, और ऊपर से अगर हम इस पे मेहनत करते हैं, थोड़ा मार्केटिंग पे भी फोकस करते हैं, तो मे बी यह मतलब बिल्कुल। मेरा हाँ, एक एक्चुअली यही अच्छे लेवल रोल है, पे आ मतलब मैंने अभी जो अपना देखिए मेरा जो रोल था ना, मतलब कम्युनिटी मैनेजर का रोल जो था, हम्म उसको अभी थोड़ा सा चेंज करवाया गया है उसको, हम्म ताकि मेरा फोकस डेटा साइंस पे बढ़े थोड़ा ज्यादा। अभी क्या हम्म था कि अभी था कि मेरे को सब कुछ देखना पड़ता था, अभी भी है, हम्म अभी भी देखना पड़ता है सब कुछ थोड़ा बहुत, हम्म लेकिन थोड़ा पर्टिकुलर फोकस आ गया है मेरा मशीन लर्निंग पे और डेटा साइंस पे। हम्म तो जहां तक मेरा सवाल है, मेरा थोड़ा इस टाइप का एडवाइस देना या इस पे क्या हो रहा है उसको ट्रैक करना, ये सब बढ़ेगा अब काफी। ठीक है, हम्म तो क्योंकि सेम चीज जो आप बात कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ अंदर में बात की, कि जो कैगल जो चीज को एक्सक्लूसिवली कर रहा है, हम लोग को भी हम्म एक्चुअली एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट करना होगा वो चीज, हम लोग ऐसा हम्म। उसको साइड में नहीं रख सकते हैं उसको। तो यही और है ये तो एक फ्यूचर है ना, मतलब डेटा साइंस एक अरे फ्यूचर है है, वो ये। बिल्कुल है, बिल्कुल है, हाँ, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड होगा मेरे हिसाब से। वही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हाँ। कि, और इस हम्म, चीज से टॉप कोडर, ठीक है, मैं काफी लोगों से बात कर रहा हूँ अभी रिसेंटली, जो कुछ हेलो, आवाज। तो, हाँ हेलो, हाँ मैंने बोलिए। बताया था ना कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की वजह से जानते हैं लोग वहां हम्म पे। मैंने काफी वेबसाइट पढ़े कि टॉप 5 वेबसाइट्स
मतलब फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो वहां पर भी मैंने टॉप कोडर का नाम देखा, बट मैं कहीं भी मतलब लाइक डेवलपमेंट या गिग्स के लिए यहाँ वहां पे मतलब मैंने नहीं देखा है मतलब टॉप देखिए कोडर का नाम। क्या हुआ था, देखिए इसका क्या कि टॉप कोडर एक्चुअली बहुत ज्यादा फेमस था एक समय में, अभी भी है, लेकिन पहले तो हम्म बहुत ही ज्यादा था। हम्म और इसका पूरा फेम जो है वो आपको लेकर के चलिए कि इसी से आया है, मतलब कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से ही आया है। ठीक है। हम्म जैसे होता है ना कि कुछ कुछ ब्रांड्स होते हैं कि उसमें हम्म मतलब कुछ प्रोडक्ट जो होता है फेमस हो जाता है, होता है ना, हम्म जैसे कि जैसे आप गोदरेज ब्रांड जो इंडिया का, जैसे हम्म आप उसमें लेके चलो कि जैसे उसका अलमीरा जो आता है काफी फेमस है गोदरेज का। ठीक है। हम्म तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि गोदरेज का ताला नहीं आता है या बहुत कुछ नहीं हम्म, आता है, आता है ना सही उसका बात। वो भी। हाँ तो हाँ। बात है कि सब कोई फेमिलियर हो गया है उससे, और बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गया था उससे, तो उसके चलते एक ब्रांड इमेज बन गया है कि वही है बस। और एक तरह से ये भी है कि धीरे धीरे एक्चुअली ये ऐड हुआ है, मतलब काफी हम्म उसका हिस्ट्री लंबा है कि पहले एक एपेरियो नाम का कंपनी मर्ज हो गया था, फिर उसके बाद विप्रो हम्म खरीदा, तो वो लोग का दोनों मर्ज करके एक टीम बना, टीम लोग फिर ये ऐड किया वो ऐड किया, तो काफी चेंजेस हुआ है इसमें ओवर द टाइम। लेकिन एक हम्म चीज जो हमेशा से रहा है वो है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो मे हम्म बी इसीलिए उस टाइप का रिकग्निशन नहीं है शायद। ठीक है। हम्म हम्म, और हाँ मैं भी, ये भी हो सकता है कि मार्केटिंग का कमी हो, मार्केटिंग में तो हूँ मैं हाँ हूँ, हाँ मार्केटिंग में हूँ नहीं, हाँ। तो इसलिए उतना आइडिया मेरे को है नहीं कि क्यों ऐसा हुआ है। लेकिन लेकिन मेरे को लगता है कर रहे होंगे, मतलब उस पर कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे शायद उसको ठीक करने के लिए अभी। हाँ हाँ, तो बस यही इस पे आप मतलब थोड़ा फोकस करो, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम्म, एटलीस्ट कैगल टाइप का कुछ है इधर, हम्म, कि लोग इंटरेस्ट ले। और मैं हम्म, भी मतलब ज्यादातर लोग जो है मतलब कुछ मेरे जूनियर्स भी है, हम्म, वो डेटा साइंस को लेकर के ज्यादा, खास करके अभी लोग वेब डेवलपमेंट तो करते ही हैं, हम्म, बट उसके अलावा सीधा लोग डेटा साइंस पे ही जा रहे हैं, हम्म, ज्यादातर लोग मैं जहाँ देखा हूँ। हम्म, और वो लोग कैगल और वो सारे हैं जिसको प्रीफर करते हैं खुद के लिए। हम्म, अगर टॉप पर आता है तो मैं शायद उन लोग को कन्विंस कर पाऊँ। हाँ जरूर, मतलब वो तो है ही। देखिए मेरे तरफ से जो, जहाँ आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, तो मेरा ही काम है ये एक्चुअली। ठीक है, कम्युनिटी रिलेटेड मेरा जो काम है वो तो मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ करने का। तो आप देखिए उसको धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करेंगे। बस ये है कि देखिए टॉप कोडर में इंटरनल काम करने का जो पेस है वो मेरे से या हम लोग से कोई जरूरी नहीं कि मैच करे, थोड़ा सा उनका तरीका है अपना हाँ काम करने का, पाँच छः बहुत सारा चीज करते रहते हैं वो लोग। तो देखिए, और एक बात ये भी है कि जैसे इनका जो जो चैलेंज का पाइपलाइन है, जो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पाइपलाइन है ना, वो भी बहुत स्ट्रांग है, मतलब और उसका मार्केट भी इन लोग का ठीक ठाक है। मतलब होता है ना कि क्लाइंट बेस्ड हम्म जिसको बोलते हैं, हम्म तो ये लोग उसको भी काफी फोकस में रखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, सिंपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो हम्म वही है। बट हाँ ये भी जरूरी है, तो इसके लिए मैं जहाँ तक हो पा रहा कर रहा हूँ। तो एक इंटरनल अभी मैंने किया भी था कॉल, जिसमें समझाया मैंने पूरा बढ़िया से कि क्या है क्या नहीं है, अभी क्या चेंजेस लाना होगा ये सब। हम्म। तो उसमें आपको दिखेगा, होपफुली आपको दिखेगा थोड़ा बहुत चेंज अभी आगे चल हाँ, के। उम्मीद है 23 तक स्टार्ट तक हाँ कुछ मिले, कुछ हाँ बढ़िया देखने को। हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं पूरा हम लोग। हाँ, आप कीजिए, खास करके डेटा साइंस के लिए तो हम भी हाँ फेवर में हैं। हाँ लम- हाँ ठीक है फिर। हाँ, ठीक है चलिए फिर। और भी जो भी क्वेश्चन होगा पूछिएगा वहाँ पे, ठीक है। हाँ, एक्चुअली अभी तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल ही चल रहा है मेरा, हाँ तो ठीक है, हाँ, इसलिए जैसा मैं भी होगा। डिस्कॉर्ड पे ज्यादा एक्टिव ही नहीं हूँ। हाँ बट ठीक। काफी सारी चीजें हैं जो मेरे को बताना है आपको, मैं हम्म बात करता हूँ ठीक। डिस्कॉर्ड पे कभी। ठीक है करिए। हम्म, फिर चलिए, और गुड वहाँ पे नाइट। वही होता है कि वहाँ पे आप क्या? जैसे कुछ पोस्ट करते हैं वहाँ पे, तो वही हम्म। होता है कि यहाँ भी बात करते हैं अच्छा लगता है, वहाँ भी करिए अच्छा लगेगा, कि जैसे थोड़ा विजिबिलिटी और ज्यादा होता है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ बहुत लोग हाँ पढ़ पाते हैं, तो और मतलब उस पॉइंट को उठा करके बात करने में थोड़ा और आसान पड़ता है। यहाँ पे भी ठीक है, बात कर सकते हैं, वहाँ पे भी करिए तो और अच्छा है। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है फिर चलिए, गुड नाइट। गुड और नाइट। हाँ, चलिए, और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्वाइन कीजिए लाइव कॉल को अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो या आप लाइव देखना चाहते हो। और इफ नॉट, मतलब वेलकम टू वॉच द वीडियो अगेन इन द फ्यूचर। चलिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीक।